Hello friends, I am CA Nikita Agrawal, trying to enlighten you the GST benefits for the educational institution by way of this video. In general sense, educational institution is an institution which caters to the last section of the society by providing the education service. But in GST law, the definition of the education institution is very specific. It is limited to the preschool education, higher secondary education and qualification recognized under any law, a approved educational vocational course. It means that if only these 4 type of services is provided by any institution, then it can be treated as an educational institution. Now the question would arise कि क्या आंगनवाड़ीज भी educational institution माने जाते हैं? बेसिकली आंगनवाड़ीज जो हैं वो एक प्री स्कूल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन अ इनफॉर्मल मैनर. देयरफॉर अगर वो प्री स्कूल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे. इसी वजह से इसी को क्लैरिफाई करते हुए CBIC ने सर्कुलर नंबर 149 इशू किया एंड CBIC हैज़ क्लियरली clarified that Anganwadis is also an educational institution and any supply of food under a mid-day program sponsored by the government or the corporate grant is also being exempt to the Anganwadis similar to the educational institution. Next question would arise ki whether boarding houses providing the lodging and the food facility to the students is also an educational institution. It can betterly be explained by way of an order given by the West Bengal AAAR in case of Search Educational Center. Basically, Search Educational Center is a boarding house which provides the lodging and food facility to the students of the secondary school run by an educational charitable society. Therefore, basically जो ये बोर्डिंग हाउस है वो कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना ही प्री स्कूल की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ना ही सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इवन कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन कोर्स भी नहीं देता जो कि लॉ ने अप्रूव्ड करा है और ना ही कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है. बोर्डिंग हाउसेस जो होते हैं, स्कूल जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के रहने के लिए उनके खाने पीने की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है. चूँकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर नहीं होते, इसीलिए बोर्डिंग हाउसेज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माने जाएंगे एज ऑर्डर्ड बाय द वेस्ट बंगाल AAAR. The next case law I am going to present is with respect to the Gujarat Authority of Advanced Ruling. In this case, the State Examination Board is organizing the exams for various fields such as employment, scholarships, etc. but is not imparting any education service. Though if it is not imparting any education service, then it can't be treated as an educational institution as observed by the Gujarat Authority of Advanced Ruling. Therefore, State Examination Board being a government authority is not an educational institution. Therefore, the exemption entry which is specifically being provided for the educational institution is not applicable for the State Examination Board. Now moving towards the basic how the exemption is being provided to the educational institution. Basically, under GST law, the education service is taxable with a tax rate of 18%, but a specific list of services is provided to the educational institutions, which comprises of the 2 parts. First, their outward supply of service, second is the inward supply of service. First, we are going to talk about the outward supply of service. In this case, first is of the any education services provided to the students, staff and faculty is being exempt from the levy of the GST. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी स्कूल हम कह सकते हैं, अगर वो कोई भी सर्विसेज स्टूडेंट को, स्टाफ को या फैकल्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए वो कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, तो उस पर GST नहीं लगेगा. जैसे एक एडमिशन फ़ीस होती है, जैसे कंप्यूटर लर्निंग फ़ीस होती है, कंप्यूटर लैब फ़ीस होती है, एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस होती है, उस पर हमारा GST चार्ज नहीं होगा.
Second outward supply of service by the educational institution is the conduct of an examination, conduct of an entrance examination against an entrance fees. Let's say अगर कोई स्कूल ICAI को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ICAI के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, तो जो वो फीस चार्ज करेगा स्कूल, उस पर टैक्स GST नहीं लगेगा. Now coming towards the inward supply of services for the educational institution. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेसिकली काफ़ी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट कुछ सर्विसेज जो है लिस्टेड करी गई हैं इस एग्जाम्शन एंट्री में स्कूल को ध्यान में रखते हुए. जैसे अगर कोई भी हम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे सपोज़ अगर किसी ट्रांसपोर्टर से बस ट्रांसपोर्टर से स्कूल ने कोई सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है और वो आगे स्टूडेंट्स को, स्टाफ और फैकल्टीज़ को अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो जो वो ट्रांसपोर्टर होगा वो GST एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लगा के नहीं देगा. सेकेंड इज़ विद रिस्पेक्ट टू द केटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट. सपोज इफ़ आई एम अ केटरर, अगर मैं कोई सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करती हूँ केटरिंग की, फूड को सप्लाई करने की, तो मैं GST चार्ज नहीं करूँगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, बिकॉज इट इज़ बीइंग एग्जम्प्ट अंडर दिस एंट्री. Now the third is respected to the security services, cleaning services and housekeeping services. These are the three services which is being exempted under GST law, especially for the educational institution. But these services are only being exempted for those educational institutions which provides the preschool and higher and secondary education services. Now the fourth exemption entry in respected to the educational institution providing a qualification recognized under law is supply of any online education journal and periodicals. It means that any person is providing services for the supply of online journals and periodicals to to an educational institution which is engaged in providing a qualification which is recognized under law is being exempted. तो वो सेट जो पर्सन है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उस पर GST चार्ज नहीं करेगा. फिफ्थ एग्जम्पशन एंट्री with respect to the inward supply to the educational institution is with respective of the admission or conducting of an examination. बेसिकली व्हाट डिड हैपन कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस तरीके की सर्विस लेना चाहता है कि वो कोई और उसके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराए, एडमिशन्स कंडक्ट कराए, तो वो पर्सन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा उसमें GST चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज़ एन एग्ज़ाम सर्विसेज. सो टू कंक्लूड we had tried to learn that Anganwadis are an educational institution, and any institution, any society, any charitable society or any other society or any other institution which does not provide the education service but gives a support service is not an educational institution. Thank you.